Morning, dear students. Today we are going to discuss a disease disorder which is related to gastrointestinal tract. हमारा gastrointestinal tract हमारे लिप से शुरू होता है और हमारे एनस पे जाके इसका एंड होता है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो जीआई ट्रैक्ट पे अपना इफेक्ट डालती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन हुआ, ब्लॉटिंग हुआ, एसिडिटी हुआ। ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं, जैसे लूज मोशन, डायरिया। ऐसे ही एक बड़ी प्रॉब्लम है जो कि धीरे धीरे डेवलप होती है, उसको हम कहते हैं अल्सर। अल्सर मीन्स हमारा जीआई ट्रैक्ट का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होता है, इसमें इरोजन हो जाता है। इरोजन की वजह से अंदर एसिड डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है और ईचिंग कॉज करता है, बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है और इंटेंस पेन कॉज करता है। तो ब्रेकडाउन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द जीआई ट्रैक्ट इज अल्सर। यदि ईसोफेगस, स्टमक या डिओडेनम में अल्सर होता है तो उसको पैप्टिक अल्सर कहते हैं। ये ईसोफेगस है, ये स्टमक है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्री पार्ट्स होते हैं, डिओडेनम, जीजिनम और इलियम। यदि डिओडेनम में, स्टमक में या ईसोफेगस में यदि अल्सर होता है तो हम इसको पैप्टिक अल्सर कहते हैं। और इसके अलावा भी अल्सर हो सकता है, पर जिस भी पार्ट में अल्सर होगा उसके पार्ट के नाम के आधार पे उस अल्सर का नाम रखा जाएगा। जैसे यदि अल्सर माउथ में होता है तो उसको माउथ अल्सर कहते हैं। ठीक है, यदि अल्सर एनस में होता है तो उसको एनाल अल्सर कहते हैं। पर इसके अलावा जो तीन पार्ट मैंने आपको बताए हैं, इसोफेगस, स्टमक और डिओडेनम, इसमें यदि अल्सर होता है तो हम उसको पैप्टिक अल्सर कहते हैं। पैप्टिक अल्सर एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड डिजीज डिसऑर्डर है जिसके बहुत से कारण हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं, पैप्टिक अल्सर इज द लेसन और ब्रेकडाउन इन द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव tract by acid. It is also called हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। इसका फंक्शन होता है डाइजेशन का। ये खाना पचाने का काम करता है, खाने को ये गलाता है, गल के खाना, जिससे आगे उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। जो मोस्टली मिनरल्स होते हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिओडेनम में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। तो जीआई ट्रैक्ट में सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये इन दिस डायग्राम आप देख सकते हैं, ये म्यूकोसा है, ये सब म्यूकोसा है और ये मसल्स लेयर है। म्यूकोसा में इरोजन की वजह से यहाँ पर रैप्चरिंग हो गई है और इस इरोजन की वजह से एसिड डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है सब म्यूकोसा के, जिस वजह से बर्निंग सेंसेशन होता है और बैक्टीरियल अटैक की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ जाती है। तो ये स्टमक एरिया है जहाँ पर ये वुंड का फॉर्मेशन हो गया है, इसको हम अल्सर कहते हैं। अल्सर को हम शुद्ध हिंदी में पेट का फोड़ा भी बोलते हैं। Now we move to the types of ulcer. Gastric ulcer, it is breaking of the mucous membrane of the stomach due to some injuries like substance, alcohol, caffeine, aspirin, long-term use of acids. इनकी वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर कॉज होता है। ईसोफेजियल अल्सर होता है। ये अल्सर में जो ईसोफेगस का जो इनर म्यूकोसा होता है, ये रैप्चर होने लगता है, जिस वजह से ईसोफेजियल अल्सर हो जाता है। ये जीईआरडी की वजह से भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिफ्लक्स इसोफेजियल डिजीज। इसमें एसिड का रिफ्लक्स होता है, इसकी ब्लोटिंग होती है और ये ऊपर की तरफ चढ़ता है। यहाँ पर जो एक चैनल होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, एपिग्लॉटिस यदि लूज हो जाए तो इस स्फिंक्टर के लूज होने की वजह से एसिड ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और ये वॉल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आके इरोजन कॉज करता है, जो कि इंटेंस पेन की फीलिंग पेशेंट को देता है। जब भी पेशेंट कुछ खाता है तो उसको स्टमक में पेन होने लगता है, एक सेंसेशन आने लगता है पेन का। Duodenal ulcer, it is an ulceration of mucosa of the first part of the intestine. Here you can see the duodenum part of the small intestine. Here is the ulcer. It's called peptic ulcer. As you know, there are three parts in which when ulcer take place, it's called peptic ulcer. Esophagus, stomach, and this part, duodenum. There are three parts of the small intestine, duodenum, jejunum, and ileum.
And three parts of large intestines are cecum, colon, and transverse colon, and other parts. Now, what are the different causes of ulcer? Helicobacter pylori is a bacteria which causes infection. For this treatment, we use antibiotic. Prolonged use of some drugs like NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. These are the painkillers. And corticosteroids, antiplatelet drugs, excessive intake of caffeine and alcohol, fasting and resting period, and prolonged excessive stress. Stress is most dominant cause of ulcer. Alcohol, smoking, NSAIDs, radiation therapy, stress and illness, tobacco, H. pylori bacteria. These are the common cause of ulcer. Now, pathophysiology. Due to the etiological factor like NSAIDs, alcohol, and fasting, it causes excess secretion of hydrochloric acid and decreases the mucus secretion. As you know, mucus is secreted by the goblet cells, which is present in the respiratory tract as well as the GI tract. And it forms a protective layer on the mucous membrane of the GI tract. And it prohibits the entrance of any pathogens inside the system. So the breakdown of mucous membrane of the stomach, it allows the acid enter into the gastric mucosa, and it's called gastric ulcer condition. Now here you can see the different region of the stomach: right hypochondrium, epigastrium region; left hypochondrium, right lumbar; umbilical region, left lumbar; right iliac region, hypogastrium; left iliac region. These are the nine regions present in the stomach. Doctor, by just palpitation, check the which part of the stomach is suffering from ulcer. Now the clinical manifestation: epigastric pain, abdominal bloating, hypochondrium region pain. Here in this diagram, you can see the hypochondrium region, which suffers from pain, and vomiting like feeling, nausea, anorexia. Anorexia means loss of appetite. Weight loss, discomfort, heartburn, dysphagia, shortness of breathing, nausea. Nausea means feeling of vomiting is called nausea. Nocturnal pain. The pain which arises especially in the night time is called nocturnal pain, and blood in the stool. In case of infection, there is an internal bleeding in the GI tract, and blood comes out from the anus when you passes feces or stool. And sometimes the pain is very dull, sometimes it's very intense pain. So especially if you want to avoid these kind of problem, you have to keep your stomach um, healthy. Avoid the spicy and the oily food. And for obese people, it is very important, necessary to reduce the weight, because obesity attracts a lot of diseases. And if you are suffering from bloating problem and nausea, vomiting, if you take food and you feel like vomiting, you need to check your liver first. And LFT test, liver function test, this test is made for a diagnosis of liver problems. SGPT, SGOT level of the enzyme inside the liver. So it helps to detect the performance of liver. Liver function test is a diagnostic tool for uh, knowing the condition cause of the disease. Now the diagnosis test, blood test, endoscopic test, and the barium swallow X-ray test. These are the common tests which is used for the diagnosis of peptic ulcer. Endoscopy is a camera technique in which the colored photo, yes, colored photo is taken of the inside of the esophagus and the other part of the GI tract.
So what are the medical management we use? Antacids and proton pump inhibitors, H2 receptor blockers, and antibiotics we use for the management of peptic ulcer. Acid is neutralized by the base. Sodium bicarbonate and calcium bicarbonate, like antacids use uh, for neutralizing acid, and it decreases the intense effect of acid. And proton pump inhibitors, omeprazole and pantoprazole like drugs, and H2 receptor blockers, it reduces the ACL. Example, ranitidine. Acelloc is a brand name. And antibiotics is amoxicillin and clarithromycin combination. These are the antibiotics which is highly used in case of peptic ulcer, because H. pylori is very attacking bacteria for ulcer. And the protective layer is erode, and it causes the direct touch of acid, and it causes pain. So these are the different reasons of the stomach, and any reason can be suffered from ulcer. And thanks for watching this video lecture. And now hopefully you have understood what is ulcer. Okay, thanks.